Hello and welcome to our sixth lecture of class 8 science. So since last lecture we are discussing chapter number 2, okay, health and diseases. So in the first two lectures of this chapter we have seen what is meant by health, disease. Okay, we have seen the types of diseases. Also we have studied one of the type, that is infectious diseases. Okay, so n number of infectious diseases are been discussed in the last lecture. Now in this lecture we are going to study some of the non-infectious disease. Okay, so what is meant by non-infectious disease? Diseases which do not occur through infections and body contacts are called as non-infectious diseases. So ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं फैलती है या फिर बॉडी कांटेक्ट की वजह से नहीं लगेगी आपको। ओके, जो बीमारियां इन्फेक्शंस या फिर बॉडी कांटेक्ट की वजह से नहीं होती है किसी इंसान को, उन बीमारियों को हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। ओके, दैट मीन्स दैट दीज डिजीजेस डू नॉट occur due to a pathogen. By the infection of pathogen, these types of diseases are not occurred. Okay, and also these diseases are not going to be spread by a body contact. These diseases arises in human body itself due to certain reasons. Now there are some reasons, okay, some of our carelessness that leads to such diseases, okay, non-infectious diseases. Now we are going to study these non-infectious diseases one by one. So we are going to see cancer, diabetes and heart diseases. Okay, these are the some examples of non-infectious disease. Okay, I hope that you have been cleared about नॉन-इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसी बीमारी जो किसी पैथोजन की वजह से नहीं लगेगी आपको, कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है, और ना ही वो बॉडी कांटेक्ट में आने के बाद, मतलब सपोज कोई पेशेंट है आपके सामने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का, उसके अगर आप कांटेक्ट में भी आएंगे तो आपको वो बीमारी लगने वाली नहीं है। ये जो बीमारियां हैं वो कुछ रीजंस की वजह से होती है, और वो रीजंस क्या है? हमारी कुछ गलतियां होती है जो हम लोग करते हैं, उस वजह से हमें ये बीमारी लग सकती है। तो वो हम क्या रीजंस है, इस बीमारियों के सिम्टम्स क्या है, और किस तरीके से हम इन बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कैसे करेंगे, वो हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। ओके, so some important non-infectious diseases. So first we are going to study cancer. Okay, now what is cancer? It is nothing but uncontrolled and abnormal cell growth is called as cancer. Okay, what is cancer? अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी ग्रोथ हो रहा है सेल का, और वो भी अनकंट्रोल्ड है, मतलब उसे वो रुक रहा नहीं है वो ग्रोथ, और वो एबनॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल जो ग्रोथ होता है हमारे बॉडी का वो ग्रोथ नहीं है। ओके, दिस इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ। तो ये जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है इसे ही हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। ओके, नाउ ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल्स आर कॉल्ड एज malignant ट्यूमर। तो यही जो ग्रो हुए हुए जो सेल्स है, जो एबनॉर्मल सेल्स है, इनके ग्रुप को या फिर लम्प्स को क्या कहा जाएगा? ट्यूमर कहा जाएगा। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? ट्यूमर बोलते हैं। ओके, नाउ कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में कैंसर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रीजन। सो व्हाट आर दोज ऑर्गन्स? लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, breast, uterus, skin and tissues like blood. So these are the organs where cancer can happen in our body. Lungs is there, mouth is there, tongue, stomach, breast, uterus, skin and tissues like blood. Okay, you may have been heard about this blood cancer. Now this cancer is used as a whole term. There are various types of cancers which are called as leukemia, sarcoma, carcinoma, okay, lymphoma. In normal terms we call it as blood cancer or lung cancer, okay, or breast cancer. So these are the some types of cancers.
Now, what are reasons behind cancer? First reason is consumption of tobacco and alcohol or smoking. Now, if a person is consuming tobacco or he is drinking alcohol, okay, or he or she is smoking, there are possible chances that he or she can get affected by this particular disease called as cancer. अगर आप तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये बीमारी लग सकती है जिसका नाम है कैंसर। ओके। सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ फाइबर कंटेंट इन फूड। नाउ फाइबर कंटेंट, ये जो फाइबर है एक न्यूट्रिशियस एलिमेंट है जो हमारे खाने में होता है, हमारे फूड में होता है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि हम लोग फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं वो अभी उतना न्यूट्रिशियस नहीं रहा। हम लोग अभी फल और सब्जी बहुत कम खाते हैं। ओके। जो लीफी वेजिटेबल्स है, ओके, फेन्यूग्रीक, ओके, फेन्यूग्रीक टाइप है, जो ये लीफी वेजिटेबल जितने भी हैं वो लीफी वेजिटेबल्स अभी हम अभी कंज्यूम नहीं करते हैं। पालक, मेथी, जो भी सब्जियां हैं वो हमें खाना चाहिए। फ्रूट्स जो है वो हमें खाना चाहिए क्योंकि फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स में फाइबर होता है। तो अगर हमारे बॉडी में फाइबर कंटेंट नहीं है, फाइबर कम है, तो भी हमें कैंसर हो सकता है। थर्ड रीजन क्या है? excessive consumption of junk food. Now this has been also a significant reason in this era, in this decade we can say. जंक फूड जो खाते हैं हम वो बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। नॉर्मली हम देखेंगे कि अभी ज़्यादातर जो लोग हैं वो जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं rather than ट्रेडिशनल फूड। ओके। नाउ this has to be prohibited because it is one of the reason for cancer. And fourth reason, that is you cannot control this reason, especially that is hereditary reason. If your parents have cancer, there are possible chances that you may have this particular disease. Okay. हेरिडिटरी मतलब क्या? अगर आपके पेरेंट्स को वो डिजीज होगा तो थोड़ा चांस है कि आपको भी हो सकता है। Now, what are the symptoms? How we can identify a patient of cancer? There are some symptoms to identify it. So, first symptom is chronic cough. Okay, there is going to be a chronic cough. You know what is by chronic? Chronic means a long duration cough. It will be. Then hoarse voice. Hoarse means husky. Okay, somewhat different kind of voice. There will be breaks while he is going to speak. Okay, then difficulty in breathing. These are the symptoms. Second symptom, incurable scar and inflammation. So जख्म हो सकते हैं शरीर में, ऐसे जख्म हो सकते हैं जो क्योर नहीं होंगे इजीली। ओके। यू मे हैव सीन द एड ऑफ tobacco and all these alcohol ads which on which they give us the idea that we have to stop consuming these products. Okay, so in on this ad you may have seen what are the conditions of patient of cancer. Okay, and inflammation is another symptom. The lumps in breast, unexplained weight loss are the some reasons of, so some symptoms of cancer. Okay. Now the diagnostics and treatment can be done for this particular disease if we know the patient, if the patient identifies it quickly what is the problem in his or her body. Okay. Now various techniques like CT scan can be used to diagnose. MRI scan is there, mammography is there, biopsy. So these are some scientific methods which can be used in diagnosis of cancer. Okay. Now, in case of treatment, along with conventional method, if we want to treat cancer, there are some methods which are therapy, radiation therapy, and surgery. Okay. Now, some modern techniques are also being utilized to treat cancer, like robotic and laparoscopic surgery. देखो कैंसर को ट्रीट करने के लिए अभी जो पहले उतनी ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स नहीं थे, लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। तो उसके लिए मेथड्स है कुछ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी कर सकते हैं और कैंसर के जो सेल्स है उनको हम बॉडी से निकाल सकते हैं। अभी मॉडर्न टेक्निक्स भी आ गई है जैसे रोबोटिक टेक्निक्स है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टेक्निक्स है। ओके।
So this technique can be used to cure cancer. Now next non-infectious disease is diabetes. Now what is diabetes? The hormone insulin produced in pancreas controls the level of sugar or glucose in blood. If insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. This disorder is called as diabetes. तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गन? पैनक्रियाज. ओके, दिस ऑर्गन is secreting one juice in our stomach, and that juice or that hormone is nothing but insulin. Okay, now this particular intestinal juice, what does it do in our stomach? It controls the level of sugar or glucose in the blood. Okay, now we consume food. Okay, in that food there is sugar. Okay, now if sugar is more than the required amount in the blood, then that amount is neutralized with the help of this particular hormone called as insulin. Okay, now for some reason, if the secretion of this insulin become limited in our body, अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में कम हो गया या फिर जो सिक्रीशन हो रहा है स्टमक में इंसुलिन का वो कम हो गया या फिर रुक गया, तो हमें एक बीमारी लग सकती है जिसका नाम क्या है? डायबिटीज है. इसी चीज को क्या कहा जाता है? डायबिटीज कहा जाता है. इफ लेवल ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड, so sugar and glucose cannot be controlled in the blood, and this particular disorder is called as diabetes. अब डायबिटीज के रीजंस क्या है, मतलब क्या रीजन है जिस वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन लो हो सकता है? पहला रीजन तो हेरिडिटी है. इफ योर पेरेंट हैव दिस पर्टिकुलर डिजीज, देयर आर पॉसिबल चांसेस दैट यू मे get affected by this disease. Second is obesity. Now what is obesity? मोटापा, फैटनेस, मोर फैटनेस. देखो एक होता है फैट होना, दूसरा होता है मोर फैट होना, ज़्यादा फैट होना. नाउ दिस कैटेगरी इज डेंजरस. ओबिसिटी, अगर हम बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं तो चांसेस है कि हमें डायबिटीज़ हो जाए, और बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं ये पर्टिकुलर रीजन की वजह से, वो है ओबिसिटी. ओके, थर्ड रीज़न क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. ऑब्वियसली ओबिसिटी अगर हो रहा है तो वहाँ पे लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी देखने मिलेगा हमें. तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नहीं करते हैं, और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जितने हम खुद को फिट रखने की कोशिश करेंगे, जितना हम फिट रहेंगे उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे. फोर्थ रीज़न इज मेंटल स्ट्रेस. सो मेंटल स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर डायबिटीज़. ओके, and now in this particular period it has been become one of the most important reason for various diseases. Now what are symptoms of diabetes? डायबिटीज के symptoms क्या है? देखो, पहला symptom है frequent urination at night. so रात भर आपको यूरिनेशन हो सकता है, frequently हो सकता है. सेकेंड क्या है? increased obesity or weight loss. if you have diabetes, so your weight can be increased or it is going to decrease drastically. Okay, these are the symptoms for diabetes. Now what are the preventive measures that can be used to be safe from this disease? First is that you have to follow the proper diet. जो आप खाना खा रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए. ओके, उसमें फाइबर कंटेंट्स आने चाहिए, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट में, ज़्यादा नहीं, एकदम नमक ज़्यादा नहीं. ओके, दिस मस्ट बी, मतलब जो हमारा डाइट है वो कंट्रोल्ड डाइट होना चाहिए. ओके, जंक फूड कम करना है हमें ताकि हम बीमारियों से बचे रहें. देन medicines and exercise under the supervision of doctor helps to keep diabetes under control. Now if there is a diabetic patient, then he has to take his medicine regularly and properly. Okay, and exercise is needed, and he have to be under the supervision of doctor. He has to consult a doctor to control the diabetes. Now, India has the largest number of diabetes patients in the world. At present, approximately 7 crore diabetes patients are there in the country. देखो, हमारे देश में 7 करोड़ के करीब डायबिटीज़ पेशेंट हैं, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए.
इन मामलों में हमें आगे नहीं रहना है, लेकिन है हम आगे। और इसे अगर कम करना है तो जो हमारी न्यू जनरेशन है उसे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। और एज वी ऑल नो दैट हेल्थ इज वेल्थ, उसको हमें ठीक से फॉलो करना होगा। ओके, ताकि हम ये जो रैंकिंग्स है इसमें थोड़ा नीचे आ जाए। ओके, वी हैव टू स्टैंड टू मच लो इन सच टाइप ऑफ रैंकिंग्स। वी आर we have a largest number of patients that has to be reduced now. Now another disease is heart diseases. So there are n types of heart diseases, but what are the possible reason behind it? We are going to study it. Efficiency of the heart decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles. देखो, अगर हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई जो है, खून का जो बहना है वो कम हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ओके, जो सेल्स को, हार्ट के सेल्स को जो ग्लूकोज चाहिए, जो स्टेमिना चाहिए, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। ओके, इस वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, उसको कम एनर्जी में ज़्यादा काम करना पड़ता है। और अगर ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है हार्ट, तो उसे हमें क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। क्या आ सकता है, हार्ट अटैक। ओके, और अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, इफ समवन हैज अ हार्ट अटैक, यू हैव टू इमीडिएटली टेक दैट पर्टिकुलर पेशेंट टू अ डॉक्टर। ओके, एंड क्विक ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हार्ट डिजीजेस के क्या रीज़न हो सकते हैं? पहला तो स्मोकिंग आता है। ओके, देखो, स्मोक करने की वजह से लंग्स जो है वो हमारे ख़राब हो जाते हैं, और लंग्स खराब होने की वजह से जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो सही अमाउंट में हार्ट तक पहुंचता ही नहीं है। सो दिस इज़ द रीज़न। देन अल्कोहलिज्म है। ये अल्कोहलिज्म क्या करता है, अल्कोहल पीने से हमारी किडनी खराब हो जाती है। किडनी का फंक्शन क्या है, इट प्योर्स द ब्लड। ब्लड को प्योर करने का काम किसका है, किडनी का है। अब अगर हमारा किडनी खराब हो जाएगा तो ब्लड ठीक से प्योर नहीं होगा, ऑब्वियसली अगेन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द हार्ट। देन डायबिटीज इज अनदर रीजन। ओके, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। देन ओबिसिटी इज रीजन, मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटापा। then lack of physical exercise. Okay, you have seen that this particular reason is seen in every disease. Lack of physical exercise, you have to perform exercises, you have to make sure that your body is fit, you are fine to remain safe from such type of diseases. Then heredity is one of the reason. Mental stress, एंगर एंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब क्या, टेंशन। सबके ऊपर अभी ज़्यादा टेंशन आ गया है, और वो टेंशन ज़्यादा लेने की वजह से भी हमें बीमारियां लग सकती है। सिम्टम्स क्या है हार्ट डिजीज के, सीवियर चेस्ट पेन्स। ओके, चेस्ट में पेन होगा हमारे, शोल्डर में पेन होगा, नेक एंड आर्म्स में पेन होगा। ओके, दर्द करेगा हमारा गर्दन, शोल्डर, आर्म्स। हैंड्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं। अनइजीनेस मतलब थोड़ा अजीब लगेगा हमें। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू फील कंफर्टेबल। देन ट्रेमर्स, थोड़े झटके आ सकते हैं बॉडी को। So these are some symptoms for a heart disease patient. Now, what can be done if a certain man, a woman have a heart attack? Okay, so obviously first aid can be, first we have to give the first aid to that patient. ओके, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, कॉल फॉर द एम्बुलेंस। 108 नंबर हो, एम्बुलेंस का नंबर है, हमें मालूम होना चाहिए। If we dial on 108, we are going to directly connected to a ambulance service. Okay, nearby ambulance service quickly. So 108 ये नंबर है एम्बुलेंस के लिए। Then we have to check whether the patient is conscious or not. Okay, so how we can check that? We have to shake his shoulders. Okay, now we have to keep that patient lying on back. Okay, पीठ के बल उसे लेटाना है, लेकिन हार्ट सरफेस के ऊपर। ओके, हार्ट सरफेस के ऊपर और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। और
अगर ज़रूरत पड़े तो हमें सबसे पहले COLS देना है उसे। COLS मतलब क्या? कंप्रेशन अर्ली लाइफ सपोर्ट। ये हम लोग ने मूवीज में देखा रहेगा। तो इसमें क्या किया जाता है? इन दिस प्रेस द सेंटर ऑफ द थोरैक्स फॉर एटलीस्ट 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक्स पर मिनट। क्या करना होता है कि थोरैक्स के ऊपर अपने दोनों हाथ के मदद से उस पेशेंट के थोरैक्स के ऊपर प्रेशर डालना होता है, थोड़ा सा प्रेस करना होता है हमें उसे। ये जो प्रेसिंग करनी है हमें, वो कम से कम 30 बार करनी होती है, और 100 से 120 स्ट्रोक पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कम से कम 100 बार प्रेस करना होता है। ओके, सो दिस कैन बी डन एज अ फर्स्ट एड टू अ हार्ट अटैक पेशेंट। ओके, so this was all about the heart disease. Okay, we have seen cancer, diabetes and heart disease. There are some more non-infectious diseases. Okay, so for your chapter, these are the three conclusive diseases that we have studied now. In the next lecture, we are going to complete this chapter. Okay, some small parts of vaccination lifestyle is remaining, so we will discuss those small parts in the next lecture. Okay, your homework for this lecture is going to be, you have to write down the reasons of cancer, diabetes and heart diseases. Okay, we will meet in next lecture. Thank you.